Hello everyone. So first let's see, are we live on the digital education? Okay, let's see first. Here we are on our channel. Yes, we are live. Hello everyone. Hello. Okay. So what we're going to study today is let's see first. Okay. So I will be presenting my notes. So we're going to study this. Let me share it full screen. Okay. I think it is visible. Okay. So what we are doing in this of the series is we are going to cover the carriers part second. Okay. What we are going to cover? Okay. We are going to cover the carriers part second, and today, guys, as promised, you won't be seeing my video, but my voice will be audible. Okay. Right. So let's start. In this of the session, let's first see what we are going to discuss about. Okay, because in that uh, this series lies. Okay, so first let's see what we're going to discuss about what not. Okay, so we'll be starting with the introduction. Okay, so now let's see what the introduction covers. Every day, the world generates a vast quantity of data. हर दिन, हर समय, हर सेकंड यार इंटरनेट पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट किया जाता है, एडिट किया जाता है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, राइट? नाउ मच ऑफ इट इज टेक्स्ट बेस्ड. काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है वो टेक्स्ट बेस्ड होता है. टेक्स्ट बेस्ड मतलब जैसे कोई नोट्स शेयर करके लेक्चर में पढ़ा रहा है, या फिर ईमेल्स हो गया आपका, सोशल मीडिया पोस्ट्स हो गए. अब कोई अगर नोट शेयर करके लेक्चर में पढ़ा रहा है तो दैट इज टेक्स्ट बेस्ड प्लस वीडियो फाइल. ओके, एंड इट कैन ऑल्सो बी image file, like I'll share an image. Okay, so what can be the image file? This can be the that image file. Okay, so like this we have the image file. Then coming back to our slide. Okay, and it can be our documents, business document. Now artificial intelligence technique that applies statistical and semantic models enable you to create application that extract meaning and insights from the text based data. ये क्या करते हैं? ये मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्स्ट बेस्ड डेटा से. नाउ Azure language provides an API for common text analysis. Azure language जो है वो API प्रोवाइड करता है common text analysis के लिए, that you can easily integrate into your own application code, जो कि आप easily इंटीग्रेट कर सकते हो अपने खुद के एप्लीकेशन कोड के ऊपर. अब हम इस मॉड्यूल में क्या क्या करने वाले हैं? इन दिस मॉड्यूल लेट्स फोकस ऑन डिटेक्टिंग द लैंग्वेज फ्रॉम द टेक्स्ट, analyzing text sentiment, extracting key phrases, entities, and linked entities. So it's a very great module. Okay. Now, before we even start, I'm going to show an example image, and I'm going to help you understand that example image. Then we will start with our main context data. Okay, so let me share that example image. This is that example image. Everyone, the screen of the example image is visible. Kindly tell. Yes, it is visible. Okay. So basically, in this is the example image. It is shown in this example image. It is shown key phrases. Then we have the news about, let's say, a country. Then entities. Okay, so basically how the news is spread, this image protocol shows that how the news is spread. Like let's say
It is, we're not talking about the news channel here. We're talking about the news on the internet. Let's say news on a particular web browser, or many times you must have seen the news on the Microsoft Edge web browser, the most popular web browsers out of all, right? So news about any particular country has its entities and its link. Okay, so this link towards the news. Uh, Basically, what is this link? Link where some of this of the document is pasted. Some of this of the document is pasted. That link we are talking about here. We have positive sentiment, and the language which we are using is an English language. Okay, यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एंड जिसको यार इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती वो गूगल ट्रांसलेटर यूज करेगा फिर into your own set of languages which you understand. For example, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, कोई रीडर है जो फ्रेंच लैंग्वेज समझता है, उसे इंग्लिश समझ नहीं आती, तो अब वो क्या करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करके लैंग्वेज चेंज कर लेगा। कोई रीडर है जो इंग्लिश समझ नहीं आती, कोई और लैंग्वेज समझ में आती है, किसी को हिंदी समझ आती है, किसी को बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस समझ आती है, तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं एज पर द अवेलेबल ऑप्शंस, राइट? So this is a basic exemplar image. Now I'm going to share directly the Microsoft Learn link. Okay, where this full content is available. So we are going to study that. Okay. So before I even share that, I will be sharing screen, screen, plans. Okay. So my screen might be visible. If it is not visible, kindly wait a few seconds. Okay, it will be visible. Okay. First of all, Microsoft is inviting you to join the Build 2026 on January 2 to 3. Sorry, June 2 to June 2 to 3, 2026. Uh, June 2 to June 3, Microsoft Build. Kindly join this. Now, scroll down करेंगे and we will be going to the develop natural language solutions in Azure. We are going to discuss about this. Now, I'll share this. Okay. I hope screen visible होगी। फुल स्क्रीन मैंने यहाँ पे शेयर ही नहीं करी है। मैंने शेयर करा है द पेज जहाँ पे हमें डिस्कशन करना है। ओके, सो Azure Foundry is our first chapter which we are going to study here, as I mentioned। चलिए भैया स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन यार हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। बेसिकली टेक्स्ट एनालिसिस फॉर पाइथन लाइब्रेरी के लिंक्स हैं ये। टेक्स्ट एनालिसिस फॉर डॉट नेट लाइब्रेरी एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के लिंक्स हैं। When you are studying JavaScript and .NET and Python, kindly view this. Now, Azure language in Microsoft Foundry tools. How do you study Azure language? Azure language को आप कैसे पढ़ते हो? Microsoft Foundry के अंदर, that we are going to discuss in detail about here. Okay, and this particular lecture is only focused on these 10 units of this chapter. Okay, out of which first unit we already covered. The second unit we are going to cover. Okay, so Azure language in the Foundry tools is designed to help you extract information
फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, एक हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एजोर लैंग्वेज फाउंड्री टूल्स में, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्स्ट से। इट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी दैट यू कैन यूज फॉर टास्क। ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो कि हम टास्क के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज डिटेक्शन, की फेस एक्सट्रैक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस, नेम्ड आइडेंटिटी रिकॉग्निशन एंड एंटाइटी लिंकिंग। अगर ये जो मैंने यहाँ पे रीड किया व्हाट इट इज, language detection, determining the language in which the text is written. So first what we do is we determine the language in which the text is written. Okay. So, okay. So what we do is first we determine the language in which the text is written. Then there is a key phrase extraction or the key phrase extraction. What we do here, key phrase extraction, it is identify important words and phrases in the text. अब कोई भी आपके नोट्स होते हैं, आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, आप इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते हो, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को ऐसा हाईलाइट करते हो, राइट? ये ओके, दिस वर्ड इज सुपर इम्पॉर्टेंट, लेट मी हाईलाइट दिस, राइट? मेनी टाइम्स यू डू, राइट? ओके। और यही हाईलाइट क्या दिखाता है, ये मेन पॉइंट्स को दर्शाता है कि भैया ये मेन पॉइंट्स आपने याद कर लिए, दैट मीन्स फुल जो चैप्टर है या आपका फुल जो यूनिट है वो आपका कवर हो गया। ओके। सेंटिमेंट एनालिसिस, क्वांटिफाइंग हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव द टेक्स्ट इज। बेसिकली आपको टेक्स्ट को मेजर करना है, आप पे कितना पॉजिटिव है टेक्स्ट या कितना नेगेटिव है टेक्स्ट। ओके। एंड एक बैलेंस क्रिएट करना है, नॉट टू मच पॉजिटिव, नॉट टू मच नेगेटिव। बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा ना तो कोई देखना नहीं चाहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो फिर इट विल साउंड आर्टिफिशियल साउंडिंग वहाँ से आ रही होगी। तो इसलिए हम टेक्स्ट को बैलेंस करके रखते हैं, नॉट टू मच पॉजिटिव, नॉट टू मच नेगेटिव, जस्ट द बैलेंस ऑफ अ टेक्स्ट। ओके, इट साउंड्स द रियलिटी। ओके। Now, name entity recognition, detecting reference to entities, including people, location, time, periods, organization, time, periods, organization, and more. Okay. Basically, what we are doing here, यहाँ पे हम रेफरेंस डिटेक्ट कर रहे हैं एंटाइटीज को। हम डिटेक्ट कर रहे हैं कुछ लोग जिनका नाम आ रहा है, लोकेशन, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो रिकग्निशन है, या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है या कुछ, एंड मच मोर। तो रिकग्निशन को हम हमेशा अलग से स्पेसिफाई करते हैं इन द टेक्स्ट। देन एंटाइटी लिंकिंग, अब रिकग्निशन को स्पेसिफाई करने के लिए नेसेसरी नहीं है यार कि आप यार अगर जैसे कहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो या इंटरनेट पे अवेलेबल डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो, रिकग्निशन को स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे इमेज रिकग्निशन। भाई हम किसी इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स से कोई एक्स इंसान ने इमेज बना के डाली है, हम उस व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में हम एटलीस्ट नेम मेंशन कर दिया या कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में मेंशन कर दिया। अगर बहुत डिटेल मेंशन करेंगे तो फिर यार एक एक चीज होती है कि यार लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या सभी को? चलिए आगे बढ़े। नाइस। तो we are discussing about is this. Okay. So now this image. Okay. Yeah, the tip is there. The tip is there. You can refer that tip or the note. Okay. Before that, this image. We already discussed about this image, right? In a very exact detail, we already discussed about this image.
Now this note point, it's already clear. You can just read it if you want for the reference. I'm going to share the content more than that. That is using Microsoft Foundry for the resource for text analysis. Okay, how to use Microsoft Foundry for the text analysis? We are going to study that. Okay, I'm going to add that. Okay, here. Okay, I believe now it is visible. Okay, just a second. Please wait. Yeah, using Microsoft Foundry resource for text analysis. Now we are going to study this. But in the description box now, I've already provided you the link for the full plan, the path to the chapter 1 link, the path to slideshare, the contact us or the doubt queries link, the visit official website link, download the app link, and all links I've provided you in the description already. तो वहाँ से आप खोल सकते हो साथ के साथ में एंड कुछ अगर क्वेरी आता है तो आप पूछ भी सकते हो ओके 1 आवर प्लस का तो ये सेशन जाएगा ही ओके यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री रिसोर्स फॉर द टेक्स्ट एनालिसिस चलिए अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं ओके So, to use Azure Foundry tools to analyze text, you must provision a Microsoft Foundry resource in your Azure subscription. Microsoft Foundry resource को हमें Azure subscription के अंदर ऐड करना पड़ेगा ये काम करने के लिए देन ये ऐड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं हम एंड पॉइंट्स यूज कर सकते हैं Azure लैंग्वेज एपीआईज कॉल करने के लिए कोड से ओके देन हम ऑथेंटिकेट करेंगे रिक्वेस्ट को ईदर प्रोवाइडिंग द की एसोसिएटेड विद योर रिसोर्स या तो हम रिसोर्स के साथ एसोसिएटेड की प्रोवाइड करेंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी प्रोवाइड करेंगे आइडेंटिटी के साथ अब यार ये इंट्रा आईडी से रिलेटेड थोड़ा सा तो ये आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी यूट्यूब पर डालना माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी रिलेटेड एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लियरली है क्या ये then you can call the Azure language APIs and also अगर आप देखोगे तो हाउ टू रजिस्टर फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी मैंने भी यार यूट्यूब पे ऑलरेडी बताया हुआ है तो आप देख लेना ओल्ड वीडियोस के अंदर कुछ होगा नहीं मिलेगा तो कमेंट कर देना मैं यार बता दूंगा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं You can call the Azure Language APIs by submitting request in JSON format. आप जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट करते हो ये JSON फॉर्मेट में सबमिट करते हो टू द रेस्ट इंटरफेस यहाँ पे इनडायरेक्टली आप क्या यूज कर रहे हो रेस्ट एपीआई वगैरह या फिर यूज कर रहे हो कोई अवेलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि स्पेसिफिकेट विद द एसडी केस ठीक है एस डी केस बेसिकली क्या होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट्स होते हैं ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आते हैं जैसे कि आपका जावा स्क्रिप्ट का एस डी के अलग होता है यानी आपका जावा का एस डी के अलग होता है ओके राइट एंड ये एस डी के जो है यार ये आपके वी एस कोड के साथ इनबिल्ट आते हैं व्हेन यू इंस्टॉल जेडीके तो अगर मैं यार जावा की बात कर लूँ फिर से तो वो सबसे पहले चलिए न्यू टैब पे आते हैं और यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए जावा जेडी के ओके और यहाँ पे यार आप यहाँ पे है ना डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए तो यार यहाँ पे आपको ये और एकल एक लिंक आएगा स्पेसिफिक लिंक वो यार सेलेक्ट करके आप यार जावा जेडी के डाउनलोड भी कर सकते हो ठीक है सो दिस विल बी अ प्रोसेस जिससे एटलीस्ट आप जेडीके इंस्टॉल कर सकते हो साथ में एसडीके आपको इनबिल्ट आ जाता है ठीक है ऑफिशियल लिंक है यहाँ से आप यार जेडीके इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है दिस इज दैट लिंक
it is loading, just a minute. I've already shared, so when it loads, automatically share हो जाएगा. Yeah, this is that particular link. White page is visible. Yeah, it might be visible now. Oracle Java download. Okay. So basically, the URL has changed somewhat to it. Okay. So not exactly the URL, the content inside the URL. The web page, the page has changed, not the web link itself. Like as you were earlier when I taught you in the course inside app, what it was here is, or inside the software basically. So what it was, ऐप पे जैसे आप ओरेकल की साइट खोलते थे ना, तो डायरेक्टली शो करता था विंडोज के लिए डाउनलोड करना है या लिनक्स के लिए. ओके, तो नाउ डायरेक्टली शो नहीं करता, अब ऐसे टैब्स आ गए. जावा डाउनलोड, टूल रिसोर्सेज, जावा वेरीफाइड पोर्टफोलियो, जावा आर्काइव. तो इसको है ना, स्क्रॉल डाउन करोगे, देन आपके पास वर्जन आएंगे. कौन से वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हो, JDK 26, 25 और 21. देन आप वर्जन्स चूज करोगे, फिर वर्जन्स चूज करके आज स्क्रॉल डाउन करोगे, तब आपके उसमें लिंक्स आएंगे. ये लिनक्स के लिंक्स चल रहे हैं, ये मैक ओएस के लिंक्स चल रहे हैं, और विंडोज़ के ये लिंक्स हैं. विंडोज़ के जैसे आपको 64 के लिए इंस्टॉल करना है, तो ये डाउनलोड लिंक है. फिर अब इस लिंक पे जाके रिडायरेक्ट होकर फिर डाउनलोड कर पाओगे. ओके, राइट. तो ये मेथड अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट ओवरऑल यार, मेथड तो लगभग सेम है. समझ आ रहा है क्या सभी को? समझ आ रहा है क्या सभी को? कमेंट में प्लीज़ यार यस या नो लिखते जाइए, जिससे कि यार मुझे जो है वो पता चलता रहेगा कि आपको यार समझ आ रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो विल बी कमिंग बैक हियर अगेन. सिंपल ऑथेंटिकेशन मेथड. आप ऑथेंटिकेट करने के लिए तो यार बेसिकली आपको जो है क्या है, यहाँ पे ये जो टिप है ये रेफर कर लेना. ओके, यहाँ पे मैं इस टिप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. देन ऑथेंटिकेशन का जो पाइथन कोड रहता है वो ये रहता है यार. अब पाइथन के लिए अगर आपको जेडीके इंस्टॉल करने हैं, तो चलिए मैं पाइथन के लिए बता दे रहा हूँ. पाइथन के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ तो आप डाउनलोड कर दीजिए पाइथन डाउनलोड. पाइथन डाउनलोड डायरेक्ट आ जाइए, सर्च कर लीजिए, तो आपके पास python.org डाउनलोड आ जाएगा यहाँ पे. तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं. नहीं तो फिर आप यार एक और टूल एक रहता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज पाइथन. आप पाइथन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये यार ये, लेकिन अगेन ये जेटवेंस का है, तो ये थोड़ा सा जो है यार ये लिमिटेड फीचर्स में अवेलेबल रहेंगे, पेड हो सकता है. लेकिन अगर आप ऑफिशियल पाइथन डाउनलोड करते हैं, तो यार ये ऑफिशियल ये फ्री रहेगा. ओके, दिस विल बी फ्री. ओके, वंस यू डाउनलोड दिस, देन देन आप डाउनलोड कर सकते हैं VS कोड एंड इन पाइथन एंड और जो भी कोडिंग्स आपकी रहेंगी, फिर आपको कोडिंग्स कर सकते हो. एंड पाइथन डाउनलोड करना तो यार डायरेक्ट ही यहाँ पे डाउनलोड आ जाते हैं. ओके, तो आप डाउनलोड कर सकते हो. ओके, फॉर विंडोज यार. ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे जाओगे डाउनलोड्स के ऊपर, और ये डाउनलोड्स के ऊपर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, ओके, चलिए. नाउ आई विल बी कमिंग बैक हियर. सिक्योरिटी इन्हांसमेंट करने के लिए यार ये कोड है. ओके, अब देखो यार,
मैं यार एक से दो पहले जो है थ्योरी सेशंस एक से दो ले लूँ, फिर प्रैक्टिकल सेशंस लूंगा तो उसमें कोड रन करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो ऑलरेडी मैं यार इंस्टॉल करके लेके आऊंगा, मैं आपको इसमें बताता चल रहा हूँ क्या क्या इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो अब जो इंस्टॉलिंग वाली चीज़ है ना, वो पहले से करके रख लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आऊँगा तो फिर मैं उस प्रैक्टिकल वाले सेशन में मैं इंस्टॉल करने का काम नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्ट यार कोड रन करके आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबे पहले भाई एक से दो चैप्टर तो कर लेने दो, फिर उसके बाद आते हैं। ठीक है। चलिए डिटेक्ट लैंग्वेज यहाँ साथ के साथ बताता जाऊँ, साथ के साथ तो बताता जाऊंगा ना। तो देखो, वन थिंग इज, आपका जो है वो कंटेंट प्रैक्टिस नहीं हो रखा होगा। तो कंटेंट प्रैक्टिस नहीं हो रखा होगा, इसमें यार कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आता है। फिर जो है आप कोड को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाओगे। ठीक है। ओके। जेसन फॉर्मेट के यार, अब जेसन फॉर्मेट के लिए आप यार टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में रन कर सकते हो, बट नॉट फॉर द पाइथन और जावा फॉर्मेट। ओके। राइट। समझ आ रहा है? ठीक है। अभी आप पहले थ्योरी समझो, थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस कर लो, थ्योरी रिवीजन करके आप फिर इवेंचुअली मैं प्रैक्टिकल सेशन लूंगा। ओके। राइट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वो तो बेटा मैंने बोला ही था। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग जो वेलकमिंग म्यूजिक होता है वो भी नहीं लगाया है ना। तब जाके देखो कितने का जा रहा है, आधे घंटे का हो गया ये सेशन अप्रोक्सीमेटली। ओके। ये आप सोच लो कि हो जाएगा ही। मैं ट्राई करता हूँ, बट आई कैनॉट प्रॉमिस एनीथिंग। ओके। डिटेक्टिंग लैंग्वेज, Azure Language Detection API in evaluates text input, and for each document submitted, returns language identifiers with a score indicating the strength of the analysis. This capability is useful for content stores that collect arbitrary text where language is unknown. Okay. So चैट एप्लीकेशन भी अनदर एग्जांपल हो सकता है इसका। देन आप जो है पॉज करके और एनालिसिस आप डिटेल कर सकते हो, वैल्यूज इवेल्युएटिंग, एंड उस पे जो भी मैथमेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप कर सकते हो। लैंग्वेज डिटेक्शन कर सकते हो यूजिंग JSON code, okay, which we saw, or the Python code. The JSON format we already saw in Path 1. Now the Python format, here is the Python format which we are going to see. Okay. So for the Python format, it is also showing what kind of output you should receive. Okay. Then the code is getting explained. तो अब ये आपको यार जो है ये आपको खुद ही पढ़ लेना है कोड एक्सप्लेनेशन। ओके। बट ऑनेस्टली आपको समझ तब आएगा जब आप कोड को यार रन करके देख पाओगे। ओके। आप बेटा इंस्टॉलेशंस करके आइए, मैं रन करवा दूंगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट सेशन इंस्टॉलेशंस करके आइए, और ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना उतना आप समझ के आइए। एटलीस्ट स्टार्टिंग के जो एक दो पन्ने हैं जहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा बेहतर से डीप में समझा है, वो तो आप समझ के आ ही सकते हो, है ना। वो तो समझ के आ ही सकते हो ना बेटा। ठीक है। हाँ तो बस वही समझ के आ जाओ, बहुत है ना। तो ये जहाँ पे मैं ओवरव्यू में समझा रहा हूँ ना अभी, मैं बाद में मैं डिटेल कवर करूँगा इसका। नहीं नहीं, ये वाला सेशन तो चल ही रहा आपके सामने, भैया बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ मैं भी।
बोल सकते हो कि आधे घंटे आसपास, 40 मिनट आसपास होगा ये सेशन, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा डिटेल अभी में क्या है यार, ज़्यादा डिटेल में अभी मेरे पास में क्या इंस्टॉलेशंस होके नहीं रखे। ठीक है, मतलब थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल बी कंटिन्यूइंग। ओके, तो कौन सी यूनिट है ये? फोर्थ यूनिट है। ओके, चलो थोड़ी देर का ब्रेक ही ले लेते हैं, और तुम लोग ने ब्रेक याद दिला दिए तो। ठीक है, ओके, विल बी गोइंग टू none other than, ओके, वाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं हमारा, एंड दिन ब्रेक ले लेते हैं। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यार पूछ सकते हो। अरे कोड रन करके मैं अभी सेटअप इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा फिर, है ना? पर आप लोगों के लिए सेशन लंबा होगा बहुत, है ना? मेरे को वैसे भी फायर वॉल वो करना पड़ता है मेरे पास। एक सेकंड, मेरे पास फायर वॉल अनेबल्ड है, तो फायर वॉल अलाउ करना पड़ता है मेरे को। एक सेकंड, होगा। नाउ आई थिंक इट हैज डिटेक्टेड। फायर वॉल बेटा इनेबल करना पड़ता है ना मेरे को, तो फायर वॉल इनेबल करने के लिए क्या था, फिर टाइम लग जाता है। तो उस चक्कर में फिर सिस्टम रिस्टार्ट होना, वो सब होना, है ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले से जो है मैं करके लेके आऊँगा। हाँ, हाँ, मैं पहले से मैं बोल देता हूँ इसलिए कि मैं करके लेके आऊँगा। और नेक्स्ट सेशन में जैसे मैंने इस सेशन में बोला ना कि पहले से हो जाएगा, करके लेके आऊँगा, तो पहले से हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, चलो। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अगेन ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट्स ब्रेक, और चलो 5 मिनट्स लेते हैं। ठीक है, ओके। नहीं, नेक्स्ट सेशन में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए कंटिन्यू करें ब्रेक के साथ। ठीक है, ओके, so I'll be adding some tune.
ओके, हाय एवरीवन। सो आई होप मेरी वॉइस सभी को आ रही है। चेक कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। ओके, so what we are going to discuss here is extract the key phrases. We're going to start this. Okay, so I hope यार ब्रेक सभी के लिए बेहतर रहा होगा एंड बेनिफिशियल रहा होगा यहाँ पे, है ना? ओके बेटा, इन ब्रेक आई कैन नॉट, देखो, मेरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन है ना? ब्रेक में भी। ओके, इवन ब्रेक। तो मैं ये नहीं कर सकता कि यार अगर आप बोलो ना ये भैया, आप क्या वो कर सकते हो कि आप जो है वो ब्रेक में इंस्टॉलेशंस कर लो। तो यार ब्रेक में मैं इंस्टॉलेशंस नहीं कर पाऊंगा, है ना? आफ्टर ब्रेक जिस सेशन एंड हो जाएगा तब मैं इंस्टॉलेशंस कर पाऊंगा, फायरवॉल एनेबल करके। नेक्स्ट सेशन में आऊँगा, डायरेक्ट एनेबल रहेगा। ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। We are going to cover extracting the key phrases. तो उसके लिए भी यार यू हैव यूजिंग द रेस्ट एपीआईज आपके पास में है यार, ये पाइथन कोड। इसको आप रन करोगे, अगेन रन करोगे, फिर ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। देन यू हैव एनालाइजिंग सेंटिमेंट। Okay, so now let's discuss this. What enhance what has what includes the analyzing sentiment. Sentiment analysis is used to evaluate how positive or negative the document is. मैंने बोला ना कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बीच का इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो भाई आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका इक्विवेलेंट है कि नहीं है? तो उसके लिए भी तो भैया कोड लगेगा। तो उसके लिए सेपरेट कोड लगेगा। तो सेपरेट पाइथन फाइल है अगेन। देन वी हैव द आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। ओके, हाँ, जैसे सेंटिमेंट यूज करेंगे, आउटपुट जो है यार ये आएगा। अब इसको नीचे एक्सप्लेन किया गया, आप देख लो वाई इट इज यूज। ओके, देन वो आपको यार करके देखोगे, अगेन मैंने बोला समझ ज़्यादा तब आएगा। एक्सट्रैक्ट आईडी एंटाइटीज। ओके, यहाँ पे जो है ये फॉलोइंग एंटाइटीज हमने एक्सट्रैक्ट करी यहाँ तक में। तो ये एक समरी है। ओके, क्या ऐसा? नहीं, ये समरी नहीं है। ये क्या है बेसिकली? पर्सन, लोकेशन, डेटा टाइम, या ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, ईमेल और यूआरएल। ये चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कुछ एंटाइटीज होते हैं, तो उसको यहाँ पे लिस्ट किया गया है कि अब हम ये वाले एंटाइटीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले रीडिंग फेज में रीड किया था। तो उसी का यार ये पाइथन कोड है टू एक्सट्रैक्ट एंटाइटीज। एंड नीचे आउटपुट गिवन है फॉर योर रेफरेंस कि भाई ये आउटपुट आना चाहिए, रन करके देखेंगे। देन वी हैव आवर एक्सरसाइज। ओके, या अटेंड कर सकते हो इफ यू वांट। आफ्टर अटेंडिंग योर एक्सरसाइज यू कैन गो टू योर मॉड्यूल असेसमेंट। अब यार मॉड्यूल असेसमेंट जो है यार आप खुद ये आंसर करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर फॉर यू। ओके, या जब प्रैक्टिकल वाला सेशन देख लोगे तब आप ये खुद आंसर करोगे। ओके, देन वी हैव द समरी। ओके, इन दिस मॉड्यूल आपने क्या क्या लर्न किया, क्या क्या नहीं, क्या बेसिक टिप है, वो यहाँ पे आपको टिप दे रहे हैं। And then all modules complete all modules. As you take that, you get your badge.
But I think this badge has currently some problem here. That is why it is not shown. Yeah, here it is. Okay. So I've already completed it. Okay. Now I can share it on LinkedIn from here. So let's share on LinkedIn. It has already completed this batch. Okay. Now here is we have shared it towards the LinkedIn. So after we have shared it our achievement, what you can do is just now few tips I'm going to give. Okay. Use that tips wisely. So what are the tips? Let's see the tips. Okay. Okay. Let's see those tips. Okay. Just a minute. Yes. Let's see the tips now. So the first tip what you are going to do is install the Python installer, and after installing the Python installer, what you are going to do is copy the code from the slides I showed you, then paste the codes and run it, and then see what the output is showing. Okay, and in case you have any doubts, kindly drop me the link of the slide on which you have the doubt from the code. Okay, then what I'll do is I'll make a separate session for that, and that kind of that code I'll run in the Python file and in the Python code editor, and then I'll help you understand what is the error, what not is the error. For the maximum problematic error part only, I will make the session. Okay. Yes, this will be as we did in path one. Okay, in path one for the doubts part, we only took it on the Zoom, uh, not the this YouTube. Okay, so this time what the difference will be? This time maximum जो भी queries रहेंगे ना, उसका मैं YouTube पे ले लूँगा. ठीक है. ओके. एंड वही जूम से रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब पर डालूंगा. ओके. सो बता देना, ले लेंगे, बट जो मैक्सिमम रहेगा उसके लिए बस. ठीक है. मिनिमम वाले के लिए हम नहीं ले पाएंगे यार. और एवरी टॉपिक के लिए अगर लेने चलेंगे तो फिर तर यही पढ़ते रह जाएंगे, आगे के चैप्टर्स पर कवर ही नहीं हो पाएंगे. ठीक है. डिफरेंस वही होता है बेटा. जब आप पेड कोर्स लेते हैं ना, आपके पास में आपके पास में दो टीचर्स आते हैं, दो टीचर साथ में रहते. एक बंदा आपको थ्योरी पढ़ाता, एक प्रैक्टिकल करवाता, और एक तीसरा बंदा होता है जो डाउट क्लियर करवाता. तो पेड कोर्स में ये चीज़ डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए करवा देते. ओके. एंड एक फीस है यार इस सेशन की. फीस ये है यार, ये मेरी लिंक्डइन आईडी है. लिंक्डइन आईडी पे जाओ. लिंक्डइन आईडी को यार क्या कर लेना है, दबा कर यार फॉलो कर लेना है लिंक्डइन आईडी को. Okay, so that is the fees for this session. Okay, now जैसे आप यार फॉलो कर लोगे तो यार मेरी फीस कंप्लीट हो जाएगी फॉर दिस सेशन. ठीक है. तो आपको क्या करना है बेसिकली, देन अगेन वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डिजिटल एजुकेशन. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. यहाँ पर यार मैं कुछ मिनट्स का टाइमर लगा रहा हूँ, देन दिस सेशन विल एंड. कोई और आपके पास में क्वेरीज है तो ज़रूर बताइए. ओके. सो द टाइमर स्टार्ट्स हियर.